Hello friends, distribution of molecular velocities। जैसे कि हम जानते हैं काइनेटिक गैस इक्वेशन में मॉलिक्यूल्स की जो वेलोसिटी होती है वो सभी की सेम होती है, बट ये ऐसा नहीं होता। सारे मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी सेम नहीं होती है। जब दो मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करते हैं तो आफ्टर द कोलिजन एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को एनर्जी ट्रांसफर करता है। जो मॉलिक्यूल एनर्जी गेन करता है उसकी एनर्जी अप हो जाती है और जो मॉलिक्यूल एनर्जी ट्रांसफर कर देता है उसकी एनर्जी कम हो जाती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करते हैं और एनर्जी ट्रांसफर करते हैं। और यहाँ पर चूंकि गैस में बहुत संख्या में मॉलिक्यूल होते हैं, मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो इस प्रकार से यहाँ पर जब कॉन्स्टेंटली कोलिजन होती जाएंगी तो वो एनर्जी का ट्रांसफर होता जाएगा और उसी के करस्पॉन्डिंग कुछ मॉलिक्यूल्स की एनर्जी हाई होगी, कुछ की कम होगी, कुछ की इंटरमीडिएट रेंज में होगी। अर्थात यहाँ पर बहुत ब्रॉड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज हो जाएगा। तो इन्हीं मॉलिक्यूल्स को जब ये संख्या में इतने अधिक है, एक फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स एक तरह की एनर्जी कंटेन करेगा। इन्हीं मॉलिक्यूल्स की एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूशन, इन्हीं मॉलिक्यूल्स की एनर्जी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वेलोसिटीज का डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मैक्सवेल ने एक कैलकुलेशन की। तो मैक्सवेल कैलकुलेटेड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज फ्रॉम द लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी and derived a equation for the distribution of molecular velocity। जो मॉलिक्यूल की वेलोसिटी है उसके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक इक्वेशन डेराइव की। यू कैन सी D/NC अपॉन N इक्वल टू 4 पाई m अपॉन 2 पाई RT टू द पावर 3/2 e टू द पावर माइनस MC स्क्वायर अपॉन 2RT C स्क्वायर DC, where D/NC is the number of molecules having velocity c and c plus dc, where D/NC is the number of molecules having velocities between C and C plus dc. N is the total number of molecules, जो total number of molecules होंगे। T is the temperature on absolute scale and M is the मॉलिक्यूलर मास। इस प्रकार से ये इक्वेशन डेराइव की गई जो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज को एक्सप्लेन करती है, एंड दिस रिलेशन इज कॉल्ड मैक्सवेल्स लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज। दिस रिलेशन इज कॉल्ड एज Maxwell distribution of velocities। और यहाँ पर जो रेशियो D/NC अपॉन DN है वो फ्रैक्शन ऑफ टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रोवाइड करता है। द रेशियो D/NC upon N gives the fraction of total number of molecules। यहाँ पर D/NC upon N gives the fraction of total number of molecules having
velocities between C and C plus DC, जो हम यहाँ वेलोसिटी को मेजर कर रहे हैं. Now Maxwell plotted such fractions against velocity expressed by the molecules, and we obtain a curve which shows the distribution of velocities in the nitrogen gas. Maxwell plotted such fractions against velocities possessed by the molecules. The curve shows the distribution of velocities in nitrogen gas N2 at 300 Kelvin and 600 degree Kelvin. It will be noticed that this is the Maxwell graph, which shows a very small fraction of molecules either have very low velocity or very high velocities. Number 1 point, a very small fraction of molecules have either very low velocity close to zero or very high velocity. नंबर 2 पॉइंट, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे इस ग्राफ में जो मोस्ट इंटरमीडिएट फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो वेलोसिटी क्लोज, एवरेज वेलोसिटी के क्लोज है, जो हमारे पीक पर, यहाँ पीक पर ऑब्जर्व हो रही है. दिस वेलोसिटी इज कॉल्ड द मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी. ये जो पीक वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी है, ये मोस्ट फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स के द्वारा यहाँ पर शो की जाएगी. इसको हम मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी कहते हैं. It may be defined as the velocity possessed by the largest fraction of molecules corresponding to the highest point on the curve. Most intermediate fraction of molecules have velocity close to an average velocity represented by the peak of the curve. This velocity is called the most probable velocity, and it may be defined as the velocity possessed by the largest fraction of molecules corresponds to the highest point
on the curve. And in the last, थर्ड कंक्लूजन इज, आप देख सकते हैं ग्राफ में जैसे जैसे हम टेम्परेचर रेज कर रहे हैं तो टेम्परेचर रेज करने पर हमारा ये जो ग्राफ है वो राइट साइड में शिफ्ट हो रहा है। 300 केल्विन पर जो हमारी ये मेन लाइन थी वो हमारी डॉटेड लाइन देखिए 600 केल्विन पर जाकर वो आगे शिफ्ट हो रहा है, राइट साइड में शिफ्ट हो रहा है। एट हायर टेम्परेचर द होल कर्व shifts to the right, जो हम यहाँ पर डॉटेड लाइन से शो कर रहे हैं। This shows that at higher temperature molecules higher velocity, fewer molecules have lower velocity। ज़्यादातर फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स यहाँ पर हाई वेलोसिटीज गेन करेंगे, जबकि कुछ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जो बहुत कम होगा वो लोअर वेलोसिटी मेंटेन करेगा, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेलोसिटी हमारी राइट साइड में इंक्रीज हो रही है और हमारा ग्राफ भी उधर की ओर कोई शिफ्ट हो रहा है। तो ये हमारा इस ग्राफ का कंक्लूजन था, ये डिस्ट्रीब्यूशन वेलोसिटी था। नाउ डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेलोसिटीज, हमारे पास 3 टाइप्स की वेलोसिटीज होती हैं, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटीज, average velocity and the root mean square velocity. So by using this derivation we can obtain the 3 types of velocities. Now first of all we will obtain the average velocities. Now the average velocity. Let us consider there are n molecules having velocity v1, v2, v3 dot shown. The ordinary average velocity is arithmetic mean of the various velocities of the molecules. जो ऑर्डिनरी एवरेज वेलोसिटी होती है वो हमारी अर्थमेटिक मीन होती है। ये दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय वी बार इक्वल टू v1 प्लस v2 प्लस v3, ये हमारा हो जाएगा, और n मॉलिक्यूल्स है तो यहाँ पर n हो जाएगा। Now according to Maxwell, from Maxwell equation, it has been established that the average velocity v of average is given by the expression एट RT upon pi m। ये हमारे पास एवरेज वेलोसिटी होती है अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल रिलेशन, एंड बाय सब्स्टिट्यूटिंग the value of R, T and M, it can be calculated। इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं जब हम यहाँ पर गैस कांस्टेंट R, टेम्परेचर T और मास, मॉलिक्यूलर मास M की वैल्यू पुट करते हैं। नाउ द सेकेंड इज द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी
if v1, v2, v3 so on are the velocities of n molecules in a gas, the mean of square of all the velocities mu square is equal to v1 square plus v2 square plus v3 square plus dot यहाँ पर ये n मॉलिक्यूल्स और mu is equal to square root v1 square plus v2 square plus v3 square plus dot dot यहाँ पर upon n. This is the root mean square velocities where mu is the root mean square velocity. But according to Maxwell theory, the value of RMS velocity can be calculated from the kinetic gas equation. The value of mu can also be calculated from the kinetic gas equation. PV is equal to 1 by 3 m n u square or u square is equal to 3 PV upon m n. Since the for n molecules mass, this bit can be written as 3 PV upon m, and for 1 mole of a gas PV is equal to RT. तो यहाँ पर हम PV के स्थान पर ये सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं 3 RT अपॉन m और U is equal to square root 3 RT upon m. This is the root mean square velocity, and it can be calculated by substituting the value of R, T and M. यहाँ पर हम इस इक्वेशन में R, T और M की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटीज कैलकुलेट कर सकते हैं. चूँकि हम यहाँ पर म्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इस तरीके से यहाँ पर इसको म्यू से भी यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं 3RT अपॉन m. दिस इज द root mean square velocity. Now last one is the most probable velocities. The most probable velocity is possessed by the largest number of molecules in a gas. Most probable velocity. Most probable velocity. The most probable velocity is possessed by the largest number of molecules in a gas. According to the calculation made by the Maxwell, the most probable velocity is given by the expression V of most probable velocity is equal to square root 2
RT अपॉन M। ये हमारे पास मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी होती है, वेयर VMPS is the most probable velocity and it can be measured by substituting the value of RT and M। यहाँ पर हम RT और M की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके इस मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी की बारे में हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो हमारी काइनेटिक गैस इक्वेशन थी, जिसमें कि मॉलिक्यूल्स की कोलिजन में किसी भी प्रकार की एनर्जी का ट्रांसफ़र नहीं होता था और वहाँ पर वेलोसिटी सारे मॉलिक्यूल्स की सेम होती थी, बट अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल जब मॉलिक्यूल्स में कोलिजन होता तो एनर्जी का ट्रांसफ़र होता। जब मॉलिक्यूल कोलाइड करते हैं तो अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र करते हैं और इस तरीके से उनकी एनर्जी, कुछ मॉलिक्यूल की एनर्जी कम हो जाएगी और कुछ मॉलिक्यूल की एनर्जी हाई हो जाएगी। और चूँकि यहाँ पर गैस में मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, संख्या बहुत ज़्यादा होती है, तो एक फ्रैक्शन ऑफ पार्ट ऐसा हो जाएगा जिसकी वेलोसिटीज़ एक रेशियो में होगी, एक टाइप की होगी। एक फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटीज़ कुछ और प्रकार की होगी। इसी प्रकार से फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स ये बनते चले जाएंगे और यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट टाइप की वेलोसिटीज़, एवरेज वेलोसिटीज़, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटीज़ एंड द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटीज़ होंगी। नाउ यहाँ पर हम इन तीनों वेलोसिटीज़ को डराइव कर चुके हैं और इन आधार पर हम इनको कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम टेम्परेचर, गैस कांस्टेंट और मॉलिक्यूलर मास की वैल्यू या मॉलिक्यूल्स के मास की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमको ये डिफरेंट टाइप की वेलोसिटीज़ प्राप्त हो जाती है। थैंक यू।